जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बड़ा ही जबरदस्त दिन है, संडे। मैंने सोचा थोड़ा सा क्वाइट से जाएगा, थोड़ी सी डिटेल में बातें करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन आज तो हमारा फोकस रहेगा ईरान और इजराइल में। इट्स अ वेरी वेरी एक्सप्लोसिव सिचुएशन। सुबह के पॉडकास्ट में मैंने आप सबको बताया कि क्या क्या हुआ है, व्हाट ऑल अटैक्स हैव हैपेंड। वन अपडेट इज देयर, सुबह हमने को लग रहा था कि 200 टोटल वेपन्स फायर हुए हैं, बट इस टाइम पे जो अपडेट आया है, देयर बीन 330 प्लस वेपन्स दैट हैव बीन फायर्ड। सो दैट इज व्हाट इट इज। एक वेपन की अभी एक फोटो आई, वो बेचारा एक इराक के किसी एक वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन में लटका हुआ है, एक ड्रोन। तो काफी फेलियर्स भी हुए हैं उसके अंदर। देर आर मोस्ट ऑफ देम हैव बीन शॉट डाउन विद द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ यूएसए, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल ऑफ कोर्स। तो आइए जरा देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह से बात करेंगे, बिकॉज सर का एक्चुअली इट्स अ कोइंसिडेंस। नमस्कार पहले तो सर, आपके साथ मेरा नमस्कार। पहला शो हुआ था हमास, फतह और इन चीजों के ऊपर। सो हमारा जो सबसे पहला फोकस था आपका और मेरा वाज ऑन द मिडल ईस्ट। एंड कैन यू इमेजिन, समवेयर अराउंड 2 years लेटर वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द सेम एरिया विद द सेम या प्रॉब्लम्स। एंड एक और एडिशनल प्लेयर जो ज्वाइन हो गया है, विच इज हम्म ईरान, जिसने आज अटैक कर दिया था। तो पहले ओपनिंग में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, वो एडिशनल प्लेयर नहीं था, वो पहले से ही प्लेयर था। ओपन प्लेयर पत्ते खोल दिए मतलब उसने। आप प्रॉक्सी से खेलता था वो। हाँ जी। अब उसने उस प्रॉक्सी के पर्दे से बाहर आ गया है। जी। जी। तो वो पुराना गाना है ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो खुल गया तो राज खुल जाएगा। तब खुल राज गया खुल सर। गया है। तो राज खुल गया है। लेकिन ईरान ने अभी उतना नहीं किया है जितना कि वो कर सकता है इन द फ्यूचर। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि ईरान इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता है, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न या कमज़ोरी कह लीजिए ईरान की, वो ये है कि उसके पास अभी फाइनल डेटरेंस नहीं है। हम्म। और वो फाइनल डेटरेंस होता है एक न्यूक्लियर हथियार। हालाँकि लोग बोलते हैं, कई कई एक्सपर्ट्स ने बोला है कि एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए $1 बिलियन पैसा चाहिए, और कुछ समय चाहिए। अब ईरान के लिए $1 बिलियन तो कोई बड़ी बात है नहीं, और समय तो वो काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा है। तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिकन रिपोर्ट ही थी ये, जिसमें ये बताया गया था कि ईरान इज़ वीक्स अवे फ्रॉम डेवलपिंग अ न्यूक्लियर वेपन। जी। ये बहुत प्रोमिनेंट रिपोर्ट आई थी, और वीक से क्या, अब तो महीनों बीत गए उस रिपोर्ट को। तो अगर हम उस रिपोर्ट को एक बेसिस मानते हैं, तो हो सकता है ईरान हैज़ सम काइंड ऑफ कुछ अ, तरह का उसके पास फिज़ाइल मटेरियल है जिसको कि वो डिलीवर कर सकता है। हो सकता है कि वो एक खाली फिज़ाइल मटेरियल ही हो, जिसको वो डिलीवर करे किसी इलाके के ऊपर, और वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें पता भी नहीं चलेगा, रेडिएशन शुरू हो जाएँगे और फिर लोगों की एक डेथ होना शुरू हो सकती है। तो और ये भी आपको मैं बताऊँ कि उसके पास 4-4 प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं। इन 4 प्रॉक्सी प्लेयर्स के साथ अगर वो डर्टी बॉम्ब वाला जो अगर फिज़ाइल मटेरियल दे देता है इनको, तो वो कहाँ-कहाँ पर मिडल ईस्ट में हरकत कर सकता है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसका जो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसमें एक डिनायबिलिटी फैक्टर होगा कि भई मैंने तो नहीं किया ये तो। मैंने तो ड्रोन्स ही फायर किए थे। मैंने तो खाली मिसाइल्स ही फायर की थी। क्योंकि जो डर्टी बॉम्ब होता है वो बॉम्ब नहीं होता है, बल्कि इट्स लाइक अ रेडिएशनल थ्रेट होती है उसमें ज़्यादा। सो वो एक ऑप्शन ईरान के पास हो सकता है इस समय हो। और यही एक रीज़न हो सकता है, जैसे कि यूएस अभी कोशिश कर रहा है कि एक एस्केलेशन कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा, हो सकता है ईरान का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन हम्म। बाकियों का भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, और ख़ास तौर से मिडल ईस्ट में होगा। और मिडल ईस्ट में होगा तो मिडल ईस्ट आपको पता है कि दुनिया की इकोनॉमी एकदम गड्ढे में चली जाएगी। जी। क्योंकि दुनिया की पूरी इकोनॉमी जो है ऑयल एनर्जी पे बेस्ड है, ऑयल और गैस एनर्जी पे बेस्ड है। और इस समय तकरीबन तकरीबन 60 ऑड % तक का जो ऑयल डिमांड है वो मिडल ईस्ट ही कैटर करता है।
तो इससे हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम इस पूरे मसले को समझने के लिए हमको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि ईरान ये कर क्यों रहा है? भाई मिडल ईस्ट में तो बाकी और भी देश हैं, सऊदी अरेबिया भी है, और भी बड़े देश देश हैं जो कि टर्की है, जो कि लीडरशिप इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप के लिए लड़ रहे हैं या आपस में एक कॉम्पिटिशन है उनके लिए। लेकिन ईरान क्यों इतना एक्टिव है? ईरान क्यों मिलिटरीली इतना एक्टिव है कि वो इस तरह की हरकत कर रहा है, इस तरह के जी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है? तो उसके लिए थोड़ा-सा हमको ना बैकग्राउंड या इतिहास में जाने की ज़रूरत है। मैंने अपनी ये जो रिपोर्ट है, एक बीबीसी की रिपोर्ट है, उससे बेस किया है और मुझे लगता है कि बीबीसी ने इस बार बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है इस पूरी उनके कॉन्टेक्स्ट का कि ईरान क्यों लड़ रहा है। पहले तो मैं बोलूँगा कि फ़ॉल्ट किसकी है? ईरान की है, इज़राइल की है, यूएस की है, सऊदी अरेबिया की है, टर्की की है। जितना आप सोचेंगे उतना ही लोगों के एंगल निकल के आएँगे। तो जी, इस समय सिचुएशन इतनी डिफ्यूज़ हो गई है कि हम किसी को अब पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। अब ये कहानी वैसी हो गई है कि अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी? अब मुर्गी आई थी या अंडा आया था, वो घूमते-घूमते अब ऐसा हो गया कि एवरीबॉडी इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर द सिचुएशन व्हिच वी आर इन टुडे, जो जहाँ तक मिडल ईस्ट का सवाल है। तो ईरान ही क्यों इतना ज़्यादा एक्टिव है इस इलाके में? उसका 5 रीज़न्स बीबीसी ने बताया था और मुझे लगता है मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ कि मैंने कई और जगह भी देखा। पहली बात तो ये है कि इस पूरे रीजन में आप देखेंगे जो डेज़र्ट्स वाला इलाका था जहाँ पे सऊदी अरेबिया वग़ैरह रहते थे, ये हंटर्स और गैदरर्स का इलाका था। यहाँ कोई सिविलाइज़ेशन नहीं थी। ये लोग खाली शिकार और वो करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन पर्शिया या फ़ारस या फिर उसको क्या बोलते हैं, पुराने ज़माने में उसका नाम पी से था। तो ये जो रीजन है इसका एक ग्लोरियस पास्ट रहा है, एक हिस्ट्री रही है। आज से नहीं, ऑलमोस्ट फ्रॉम क्रिश्चियन एरा शुरू 3000 होने के, इयर्स, या तो ये 3000 इयर्स। या इतनी फेमस सिविलाइजेशन है, तो सब उनको लगता है कि अगर हम इतने पुराने सिविलाइजेशन है और अनचेंज्ड है, अनचेंज मतलब उनका कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो पूरा रीजन अभी भी उन्हीं के काबू में रहता है। तो हमारा एक रोल होना चाहिए रीजन के अंदर और वर्ल्ड के अंदर। तो ये ड्राइविंग फैक्टर है ईरान के जो रूलर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आपको पता है इस समय जो ईरान में रूल कर रहे हैं वो ट्रेडिशनली अ, ऑर्थोडॉक्स हैं और इरानियन सिविलाइजेशन पे काफ़ी उनका झुकाव है। दे आर ऑलमोस्ट लाइक अल्ट्रा लीनिंग्स हैं उनकी। ख़मैनी अयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जब 1979 में शाह ऑफ ईरान को डिथ्रोन किया एक रेवोल्यूशन के द्वारा, उसके बाद से ये जो फीलिंग और ये जो झुकाव है ज़्यादा हो गया है। मोर प्रोनाउंस्ड इन द रीजन एंड दैट इज़ व्हाई आपको पता होगा ईरान-इराक वॉर भी हुआ और कई सारी घटनाएँ हुई, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। दूसरा रीज़न है वो यूएस फैक्टर। अब ईरान को हमेशा लगता है, ईरान के रूलर्स को, कि ईरान की सारी मुसीबतों की जड़ कौन है? अमेरिका यूएसए, है। शाह ऑफ ईरान किसने बिठाया? यूएस ने। अमेरिका। हुँ, उसके बाद जब वो एम्बेसी वाला केस हुआ था और कार्टर ने क्या बोलते हैं, रेड करने की कोशिश की थी, वो एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ। फिर उसके बाद ईरान-इराक वॉर में भी इराक को सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएस कर रहा था उस टाइम पर। बाद में यूएस ने इराक को भी अटैक किया, वो अलग बात है। बट ईरान-इराक वॉर में यूएस को अटैक किया। इनफैक्ट ईरान में इस तरह के नारे बहुत कॉमन है, डेथ टू अमेरिका, हुँ, अमेरिका गो आउट, ये काफ़ी कॉमन है। और अगर आप करंट उसमें आएँगे तो जो 6 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था, उसके बाद अमेरिकन बेसेस पे करीबन 170 अटैक्स हो चुके हैं, जी, प्रॉक्सीज़ द्वारा। और सबका वो प्रॉक्सी बोलते हैं ईरान इज़ द मास्टर ऑफ द वेरियस प्रॉक्सीज़। तीसरी चीज़ है इज़राइल। इज़राइल ईरान के लिए
देखिए हमास जो है वहाँ पे, और या फिर फतह जो है, दोनों, पहले फतह था, बाद में हमास आया। अभी भी फतह है, लेकिन जो प्रोमिनेंस है इसकी ज़्यादा है, हमास की ज़्यादा है। तो ये जो हमास है एक सुन्नी ग्रुप है, और ईरान जो है एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है। लेकिन ईरान ने अक्सर ये किया है कि अगर उसका एंड सर्व हो रहा है लीडरशिप लेने के लिए इस पूरे रीजन की, तो वो किसी भी ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो सऊदी अरेबिया और बाकी जॉर्डन और ये सारे ग्रुप कंट्रीज़ हैं, इनकी लीडरशिप, इनको वीकन करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, कि अगर ये कमज़ोर होंगे तभी वो लीडरशिप रोल में आएँगे, तो वो हुँ, हमास को सपोर्ट करता है। उसी तरह से जहाँ तक हिज़्बुल्लाह का सवाल है, वो तो ख़ैर शिया ग्रुप है। तो हिज़्बुल्लाह जो है, एक तरह से कनेक्ट बन गया है हमास, ईरान और हमास और ईरान के बीच में। और हिज़्बुल्लाह की जो आर्मी है या जो सिक्योरिटी सोल्जर्स हैं, वो ज़्यादा हैं, करीबन 100,000 के करीब हैं। अगर 40,000 आप हमास को मिला लीजिए, अब तो काफ़ी मर गए हैं, बट फिर भी 20-1,000 तो अभी भी ज़िंदा हैं, ये आप अज़्यूम करके देख लीजिए, क्योंकि कैजुअल्टी जो 34-35,000 हुई हैं हम इज़राइल में, वो सिविलियंस की ज़्यादा हुई हैं और हमास के कैडर की कम हुई हैं। तो अगर आप इस तरह से देखें तो करीबन 130,000 तो यही हो गए। 20-30,000 आप हौतीस को मिला लो, तो 100 एंड कुड्स 180 ऑड थाउज़ेंड ये हो गए, राइट? उसके बाद अगर आप ये जो दूसरे जो ग्रुप्स हैं, कुड्स फोर्स एंड रेजिस्टेंस एंड इस्लामिक जिहाद और ये वो काफ़ी सारे हैं। इन सबको मिलाओ तो 200,000 तक का ईरानियन प्रॉक्सी प्रेजेंस है इस इलाके में। उसकी खुद की जो ओके, आर्मी है तकरीबन 300,000 की है, और 200 रिजर्विस्ट्स हैं। तो 500 ऑड थाउज़ेंड की जो आर्मी फ़ोर्स है, ये आर्म्ड फोर्सेस का जो ये पूरा एक बड़ा मास है, इस पूरे इलाके में इफ़ेक्टिव है। आप इससे समझिए कि कहाँ से ही इज़ ड्राइंग दैट पावर। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं पूरी तरह से उनकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह एक्सेप्शन है। हिज़्बुल्लाह इज़ एन एक्सेप्शन। हिज़्बुल्लाह जनरली लिस्टेन्स टू व्हाट ईरान सेज। जनरली बाकी ऐसा। हौती हौती वगैरह अपनी मर्ज़ी से भी काम करते हैं। बट दैट नॉटविथस्टैंडिंग, this they are using as a Israel as a tool to show to the Islamic world that if there is anyone who can ensure your safety from Zionist forces, it is वो ईरान है, न कि सऊदी अरेबिया। और वो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सऊदी अरेबिया। चौथा रीजन, क्योंकि सऊदी अरेबिया को वो एक कंपटीशन के तौर पे देखता है। जियोपॉलिटिकली एक अलग बात है, रिलीजियसली भी वो उसको या एक कंपटीशन के तौर पे देखता है, क्योंकि शिया सुन्नी, सऊदी अरेबिया जो है सुन्नी सेक्ट का एक तरह से फाउंटेन हेड है। इट इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ द सुन्नी ग्रुप, ऑब्वियसली बिकॉज मक्का मदीना ये सारी चीजें सऊदी अरेबिया में है। उसको बोलते हैं कि केयर टेकर ऑफ इस्लाम। प्रोफेट, द एंटायर उनका जो वो है, जो रिलीजियस सैंक्टिटी है उसका पूरा, वो केयरटेकर है सऊदी अरेबिया, जो कि ईरान को नहीं भाता है, क्योंकि शिया हैज अ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट ऑफ द प्रोफेट। सो इसलिए एक रिलीजियस डिफरेंस प्लस एक लीडरशिप डिफरेंस, दोनों मिला करके इट इज अ मच मोर पोटेंट एनिमोसिटी देन यू कैन से इवन इजराइल। बट बीच में कुछ चाइना ने इसको कम करने की कोशिश की, कुछ डील्स वगैरह करी, बट आई थिंक वो डील्स का कुछ ज़्यादा मतलब नहीं निकला। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा फ्लटर हुआ, बट आफ्टरवर्ड्स आई थिंक एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। सऊदी अरेबिया, ईरान, दोनों में अभी भी उसी तरह का अलगाव है। और टेंशन। लास्ट जो चीज़ मुझे लग रही है, ईरान का एक स्ट्रैटेजिक मूव था प्रॉक्सीज़ के थ्रू लड़ाई करने का। ईरान जहाँ पुरानी सिविलाइजेशन है, उसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, इट हैज़ द नेसेसरी, आफ्टर ऑल अगर आप पुराने ज़माने में जाएँ तो फ़ारसी में ही सारी आपकी एजुकेशन थी, साइंस का डेवलपमेंट, सारा कुछ फ़ारसी में हुआ है। तो ईरान एक फाउंटेन हेड था मॉडर्नाइज़ेशन का अपने ज़माने में,
राइट? उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया एंड थिंग्स, द वेस्टर्न वर्ल्ड टुक ओवर। सो ईरान ये समझता है कि जब तक उसके पास फुल डेटरेंट कैपेबिलिटी नहीं आती है, ही कैन नॉट अज्यूम द रोल ऑफ अ लीडरशिप। लीडरशिप। सो व्हाट ही शुड डू इज नेवर गो डायरेक्टली। सुन को थोड़ा मॉडिफाई किया है ईरान ने। सुन बोलता है हाइड योर इंटेंशन बाइड योर टाइम, ये बोल रहे थे इंटेंशन तुम हाइड नहीं करेंगे, हाँ तरीका जरूर अपने इंटेंशन को जाहिर करने का बदल देंगे, और वो होगा थ्रू प्रॉक्सीज, एंड हाँ वी विल बाइड अवर टाइम टिल वी गेट द न्यूक्लियर और द फुल डेटरेंस कैपेबिलिटी। आप समझ रहे हैं? सर, इसीलिए हाँ, बोलिए। एक और चीज करते हैं सर ये लोग, आई मीन ये हमने कभी एक बारी पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि ईरान के ये जो प्रॉक्सीज यूज करने का एक और नतीजा है ना, कि इन्होंने जो भी वॉर है अपने बॉर्डर से दूर रखी है सर। वो अगला पॉइंट है, आप मेरी स्लाइड में देखेंगे तो आपको नजर आएगा, डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। वो ओके। उन्होंने भी अमेरिका अमेरिका वाली ही स्ट्रेटजी अप्लाई करी है कि भाई क्योंकि मेरे पास फुल डेटरेंस नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा। और ईरान इराक वॉर में ईरान का काफी नुकसान हुआ था, उसको उस पूरे नुकसान से उबरने के लिए काफी टाइम लगा था। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं जितना अपनी धरती से दूर लड़ूंगा, as far as possible if I fight, the impact on its own economies or on its own well-being would be less. मच एंड लेस। इसीलिए जैसे अमेरिका जहां ट्रबल स्पॉट होती है वहीं लड़ता है, ताकि उसके कोस्ट तक कोई लड़ाई ना आए। एक्सेप्ट वंस और ट्वाइस इट हैज कम, क्यूबन क्राइसिस एंड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो 9/11 का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके अलावा external threats have not come as close as possible, barring the Pearl Harbor. एक आध केसेस हुए हैं, but not many, you can count them. So वही स्ट्रेटजी ये यूज कर रहा था। सिंस इट इज नॉट अ लार्ज नेवल पावर, उसने ये प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया, और प्रॉक्सीज के थ्रू ये अपनी जो इन्फ्लुएंस से इस रीजन में बढ़ा रहा था। तो ये पांचवा रीजन है कि ये प्रॉक्सी वॉर क्यों कर रहा था, डिफेंसिव स्ट्रेटजी के तौर पे, कि भाई मैं जब तक अपना फुल डेटरेंस नहीं तैयार कर लूं, तब तक मैं इसी तरह से लड़ता रहूंगा। अब कुछ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं आपको फोटोएं दिखाऊंगा, जो कि आप लोगों को शायद आपके व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। अगर आप आगे जाएं तो अब ये देखिए, ग्लोरियस पास्ट की जो मैं बात कर रहा था, पर्शियन एम्पायर जो है वो कहाँ तक फैली हुई थी, उसके बाद आई ओटोमन एम्पायर। आप समझ रहे हैं, पूरा इराक, ईरान, सीरिया, ऊपर से यूरोप की तरफ बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट। तो ओटोमन एम्पायर का रिवर्स था पर्शियन एम्पायर। और ये उनको लगता है कि हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक है कि हम अपने छोटे से इलाके में आके सीमित हो गए हैं, लिमिटेड हो गए हैं। हमको चाहिए कि दोबारा हम अपना जो प्रभुत्व है, दोबारा जो अपना इन्फ्लुएंस है, वी शुड गेन अगेन दैट इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट पुराने जमाने की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, दे हैव ऑलवेज बीन फॉट बिटवीन पर्शिया एंड द रूलर्स अक्रॉस द ओशन, यू नो। हम्म। सी बेस्ड अटैक्स ज़्यादा हुआ करते थे। तुसीडीडस वगैरह, अगर आप उन पुरानी हिस्ट्री पढ़ें वॉरफेयर की, काफ़ी कुछ आपको चीज़ें मिलेंगी टू लर्न। सो दिस इज़ एज़ ओल्ड एज़ दैट। सो नेक्स्ट जो मैं बताऊँगा आपको, देखिए आगे जाइए। ये इसके प्रॉक्सी वॉर के ना क्या बोलते हैं एलिमेंट्स हैं। हिजबुल्लाह, हूती, कहाँ-कहाँ हमास। ओके। और क्या बोलते हैं, कहाँ-कहाँ पर ये लोग जा कर के इन्होंने किस तरह से अपना अपना जो ऑपरेशंस है पूरे मिडल ईस्ट में फैलाया हुआ है, ओशंस में फैलाया हुआ है, हम्म। राइट? हम्म। ओशंस में भी फैलाया हुआ है। Not only on the land but in the oceans also, making the trade difficult for people, making people invest in security of the of the liners, जो ट्रेड लाइनर जो जाते आते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी को ड्रेन भी कर, आपकी इकोनॉमी को ड्रेन भी कर रहा है वो। क्योंकि अगर आपको, अब देखिए चाइना को अगर पायरेसी के अगेंस्ट यहाँ पे एक्टिविटी करनी है, सोमालिया के ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, रेड सी वगैरह, तो he has to move his ships from China to this place, which in itself is a big
बिग बर्डन ऑन द एक्सचेकर। इसी तरह से इंडिया का हो गया, इसी तरह से यूएस, यूके सभी का। तो ये बेसिक रीज़न ईरान का इज़राइल के खिलाफ या मिडल ईस्ट में एक्टिव रहने का, डोमिनेट करने का रीज़न रहा है। अब आ जाते हैं हम क्या बोलते हैं अगली एक स्लाइड पर, ये है ज्योग्राफी। आज के परिप्रेक्ष्य में इन टुडेज़ कॉन्टेक्स्ट, हाउ इज़ द सीन लुकिंग लाइक? राइट? बिल्कुल। There is Iran trying to become nuclear or it is already nuclear. हुँ, Pakistan, a nuclear state. न्यूक्लियर। USA has the submarine, nuclear submarine also, uh, nuclear submarine also in this particular region as part of its fleet. दोनों तरफ towards the west of Israel as well as in the Arabian Sea. Right? अब आप देखिए इंडिया न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। इट इज ऑपरेटिंग इन द अरेबियन सी। उधर आप देख लीजिए रशिया, अगेन अ न्यूक्लियर स्टेट, बैंगिंग इट्स हेड इन यूक्रेन एंड सीरिया बोथ। हुँ, इट हैज अ लार्ज प्रेजेंस एंड सीरिया ज्यादा दूर नहीं है इसराइल से। हुँ, टर, टर्की, a nuclear resident state, nuclear weapon resident state. It's not doesn't have nuclear, it doesn't अपनी have nuclear capability, but it has the nuclear weapons वेपन्स। on its soil. So and the method of delivery भी है उसके पास। तो ये जो रीजन जो है ना, इस समय इट्स लाइक नॉट इवन अ मेल्टिंग पॉट, इट इज अ बॉम्ब। अगर इसको ठीक से मैनेज नहीं किया तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। पूरी की पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। जी। और यही एक बड़ा रीज़न मुझे लगता है, इज़ द फैक्टर व्हिच इज़ रिस्ट्रिक्टिंग एवरीवन। हुँ, हुँ, सबको रोक के हुँ, जो रख रहा है वो ये फैक्टर है। आपकी जितनी भी जो आपने एनालिसिस सुबह अपने वीडियो में करी थी, उसका उसका जो निचोड़ है ना, वो ये है। ये कहीं न कहीं याद है इराक के लिए उन्होंने बोला कि उसके पास जी, न्यूक्लियर वेपन है, उसको हम अटैक करेंगे। जबकि उस समय लोगों ने बोला था कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। नहीं है। और शायद उनको पता भी था। अभी क्यों हेजिटेट कर रहे हैं? अभी हेजिटेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की रिपोर्ट्स जो हैं, कई कुछ कन्फर्म करती हैं और ईरान ने आज से नहीं, करीबन 20 साल पहले से इस पे एफर्ट लगाना शुरू कर दिया था। और इतना तो आप यू हैव टू ग्रांट टू देम दैट दे मे हैव एक्चुअली काइंड ऑफ हो सकता है सम फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उन्होंने ले ली है। वेदर इट इज़ जस्ट fissile material developed for nuclear grade weapon grade nuclear fissile material, whether they have the capability to give some dirty bombs to their proxies। इसीलिए मैंने प्रॉक्सी वाले वो दिखाए थे आपको कि कहाँ कहाँ हुँ, से कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं इसको लेकर के। इट डजंट रिक्वायर मच ऑफ एन एफर्ट। एंड आपको पता है ये लोग सुसाइड बॉम्बर टाइप हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर उसके बाद वो जिंदा है या मर गया, बिकॉज ही इज गोइंग ऑन अ वन वे टिकट। वो वन हुँ, वन वे टिकट लेके जा रहा है। ब्लैक स्वान इवेंट की आपको चिंता करनी पड़ेगी अभी। मेरा कहने का मतलब है, ये जो आज देखा है आपने 330 ड्रोन्स कम बैलिस्टिक मिसाइल्स कम और भी कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या-क्या रॉकेट्स भी बोल रहे हैं, बट मुझे तो नहीं लगता है। बट ऑल दीज़ व्हिच हैव बीन फायर्ड एंड दे हैव बीन इंटरसेप्टेड थ्रू अ जॉइंट एफर्ट ऑफ यूएस, यूके, जॉर्डन एटसेट्रा। सभी ने अपने फाइटर्स भी भेजे हैं और कई सारे तरीकों से इन्होंने मोस्ट ऑफ द अटैक्स हैव फेल्ड बट सम हैव लैंडेड इन इज़राइल। कुछ एक 8 लैंड कर 8 गए मिसाइल्स, इज़राइल। 8 हाँ, मिसाइल्स सर। या तो सम हैव लैंडेड, सम ड्रोन्स हैव लैंडेड। तो कहने का मतलब है ये 6 अक्टूबर टाइप ऑफ एक्शन किया था कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ लॉन्च करो ताकि कुछ एक तो पहुँच जाए इज़राइल में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, सीइंग द काइंड ऑफ कंडीशन, there may be a chance that there would be a climb down from both sides। चांस है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, बट एक चांस है कि क्लाइंब डाउन हो। अब आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ-कहाँ पर हैं।
प्रॉक्सी वॉरफेयर, हर जगह है, यूक्रेन, गाज़ा, सीरिया, हाउथीज़, यमन एंड टेररिज्म की तो कोई कहानी नहीं है, कहीं-कहीं पे। हर जगह है सर, पोटे हर जगह है। पोटेंशियल टू erupt into crisis, South Asia, South China Sea, East China Sea. Now if you just plot them on the map of the world, हम नियर वर्ल्ड वॉर स्टेट में तो आ ही गए हैं। जी, इट्स ओनली दैट वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। पहले भी जब वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था तो क्या हो रहा था? अफ्रीका में लड़ाई हो रही थी, यूरोप में लड़ाई हो रही थी, जापान सॉरी पैसिफिक में लड़ाई हो रही थी, यही चल रहा था। और कुछ हुँ, इंडियन इंडिया इंडिया म्यांमार उसमें बर्मा बॉर्डर पे लड़ाई हो रही थी, सिंगापुर तक आगे पीछे जा रहे थे। तो कहने का मतलब है इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि लड़ाई करने का तरीका बदल गया है। हुँ, कहीं ग्रे ज़ोन में लड़ाई हो रही है, कहीं कन्वेंशनल में लड़ाई हो रही है, कहीं प्रॉक्सी से लड़ाई हो रही है, बट द वॉर्स आर ऑन करेक्ट एंड सर। आई सपोर्ट these are the indications of a World War III unless the world sees this picture which I've just shown to you कि इसको देख करके कोई क्लाइम डाउन हो, कोई कुछ हो, नहीं तो इकोनॉमी, ह्यूमैनिटी सभी लोगों को इसके इसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे, सभी देशों को। और अमेरिका हो चाहे चाइना हो, हुँ, सभी लोगों की मैं वो हिंदी में कभी-कभी हम लोग यूज़ करते हैं ना चलता-चलता, चलते-चलते बात करते हैं, तो सभी लोगों की वाट लगने वाली है, राइट? इन नो सिंपल वर्ड्स सर। हुँ, Yeah, if you go to the next one, I suppose I think this is the last, if I'm not wrong. एक और है सर, हाँ। Yeah. So what are the big question जो आपने आज का शो के लिए मेरे को बताया था? कैच 22 पोजीशन में हैं सभी लोग। जी, Everybody is in catch 22 position. Rest of the मिडल ईस्ट स्पेशली सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया क्या करे? Which side should it tilt? If it takes action against anything related to Iran, it will be considered as supporting the cause of Israel. अगर वो अगेंस्ट ईरान जाता है, आई मीन सपोज इट उसका गोज इन पोज़ीशन तो वैसे ही है सर, अगर ये जो इंटरसेप्शन करी है वो तो एंटी ईरान टाइप ले सकते हैं कि नहीं? नहीं सऊदी अरेबिया ने कोई ज़्यादा इंटरसेप्शन नहीं आई डोंट थिंक सऊदी अरेबिया ने इंटरसेप्शन की है। करी है सर, करी है। मुझे दे हैव जो नॉट बताया था ओपनली एडमिटेड इट बट यूएस के मुझे जो 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 सोर्सेज़ रिपोर्ट्स आई हैं, जो रिपोर्ट्स मैंने सुनी है उसमें इट इज़ शोइंग जॉर्डन, इट इज़ शोइंग यूके, इट इज़ शोइंग यूएस, but एंड सऊदीज़। not about Saudi. But if हुँ, you are saying so, then this is a question which Saudi Arabia may have to grapple with internally कि भाई आप आप जो है सपोर्ट कर रहे हो पीपल पैलेस्टीन के खिलाफ, राइट? सर आपने पैलेस्टीन को एक जो सपोर्ट बोली थी, आपने जो वॉर के बारे में बोला सर, ये मेरा एक मैप था, मैंने इसको बनाया था, आर्क ऑफ वॉर बोला था मैंने ये। बिल्कुल तो ये आपका उसके आपने जो चीज़ बोली है एग्ज़ैक्ट सेम थिंग आई हैव जस्ट पुट इट ऑन अ मैप या एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस। दे कॉल इट एज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। जी, वो लोग इसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। Can you go back to my slide? यस I सर, have some राइट हियर। questions. So Saudi Arabia is in a dilemma, right? Which side to go, or it will be underhand doing the actions. Now, any kind of a nuclear war, nuclear action, Saudi Arabia will be deeply affected by that, deeply impacted by that. But that Saudi Arabia cannot अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह का टर्मोइल। मैं बात कर रहा हूँ, याद है जो ईरान कर सकता है कुछ ऐसा, हुँ, अगर हुँ, मान हुँ। लीजिए उसने इजरायली बॉर्डर पे कुछ किया, उसका इम्पैक्ट इधर भी आ सकता है। जी, पाकिस्तान की हालत तो और भी खराब है, वो किधर जाए?
Should it support Americans? The Chinese will get annoyed. If it supports the Iranians, the Americans will get annoyed. The Saudis will get annoyed. So Pakistan, in my view, is again in a very very bad situation. अगर मिडिल ईस्ट में कोई लड़ाई होती है, it will have to take a call. यूएस की डिलेमा है कि एस्केलेट करें या ना करें, क्योंकि अगर एस्केलेट करते हैं, यूएस is in the least danger for reasons that the United States is far away from the conflict. तो उसके कॉन्टिनेंट में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में इसके जितने भी एलाइज हैं, दे विल गेट बैडली अफेक्टेड। और आपको पता है कि हुँ, हुँ, देवर एक्चुअली वन ओवर 1 लाख सोल्जर्स थे मिलिट्री बेसिस में सऊदी सॉरी मिडिल ईस्ट में। मिडल ईस्ट अभी में। उसको कम कर दिया है, उसको कम कर दिया गया है, बट स्टिल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स। अभी कुछ दिनों पहले अगर आपको रिपोर्ट आई हो तो 3 सोल्जर्स भी मारे गए थे इसी तरह के प्रॉक्सी अटैक में, जिनकी डेड बॉडीज वापस गई थी। काफी हल्ला गुल्ला हुआ था एंड एंथनी ब्लिंकन ने बोला था कि वी विल टेक रिवेंज फॉर दिस, राइट। न्यूक्लियर डायमेंशंस की मैंने काफी बात कर ली है। इसमें अगर कुछ हुआ तो इट्स लाइक अ बॉम्ब, it's a mega nuclear bomb, this particular region, and we need to tread with caution. What about India? Can India sustain its strategic autonomy in this kind of a environment? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सो कूलर्स कौन है इस पूरी सिचुएशन के? जो बॉम्ब के जो कूलर्स होते हैं ना, हु आर द कूलर्स ऑफ दिस बॉम्ब? यूनाइटेड नेशंस? आई हैव माय डाउट्स। इंडिया? इंडिया नोबडी एल्स लिमिटेड, सर। लिमिटेड। बट सर कोई किसी और की सुनेगा नहीं ना कोई। इजिप्ट, टर्की, चाइना, इजिप्ट, टर्की, चाइना, हुँ, और द दोहा 6 बिलियन स्टोरी। वहाँ पर थोड़ा है। 6 billion story. We will release हुँ, the frozen money. Climb down, pipe down, beta. Otherwise, the consequences are going to be big. या या Then the last is there could be a escalated de-escalation. Sorry, staged de-escalation or step down de-escalations. That means there will be an interim de-escalation and then there will be an end state de-escalation. Interim de-escalation, the model is what happened between Iran and Pakistan strikes. हुँ, Okay, ठक first ठक एंड the फिनिश्ड। first the Iranians did a strike, then the Pakistanis retaliated, then there was a talk, cut, 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 cut. Okay, foreign ministers meet, ye wo, falana, dhimkana, and then things go quiet. Something similar, the Israelis had their way by striking at Damascus. Iranians have had their way by striking at Israel and many other countries, whether it was by fault or by default or by हुँ, Chinese mal which was being fired by the Iranians, which misfired, misbehaved, and fell. Some fell in Iraq, some fell in Saudi Arabia. I don't know where all these drones have fallen down. Of course, most would have happened because of counteraction. Point I'm trying to say is that both sides have something to crow about, and then they are told, okay partner, this is a very serious game, do not escalate. The us ठंडे हो जाओ। plays the us and china and maybe india as some kind of a neutral player, get together, get iran and bibi netanyahu to 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 talk to each other and get the things. It is not as difficult as the russian problem, because in the case of russia, russia is a superpower in military strength. It's a superpower. That's not the case with Iran. So piping down Iran may be a easier option than getting Russia to be out of Ukraine or getting Russia to stop the war in Ukraine. बट सर इसके अंदर ईरान को तो अभी देखिए वन बिग फैक्टर इसके अंदर है कि इज़राइलीज़ आर वेरी इम्पल्सिव और ये तो अभी भी बोल रहे हैं हम तो ठोकेंगे, हम छोड़ने नहीं वाले इनको। I agree. See, तो that is the posture. That is the posture which the Israelis always adopt. But they have also come down. If you know, in the Hezbollah war, they came down. In the Lebanon war, हाँ, 2006. भैया So ये it's वाला not that. सिचुएशन में सर
सुबह सुशांत सरीन ने एक ट्वीट करा, व्हिच इज व्हाट इज काइंड ऑफ गिविंग मी द डाउट, एंड वही मेरे को आपसे एक्चुअली पूछना था कि सुशांत ने ये बोला, एंड काइंड ऑफ इट दैट थिंग इज नैगिंग एट मी क्वाइट अ बिट। इन्होंने बोला कि साहब देखो ऐसा है, अगर इजरायलीज कुछ नहीं करेंगे, ईरान ने अपनी छाती पीटनी है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड को बोलना है भाई साहब अब मैं हूं लीडर, तुम सारे किसी को संभाल नहीं सके, देखो मैं ही छू सका जाके इसराइल को अंदर। हाँ चाहे So, मेरे 300 में से 3 गिरी, बट बाकी सब ठीक है, मैंने ही छुआ लेकिन जाके। तो वो एक so, एक so एक they, चक्कर है। but so, but you should also take into consideration that while Iranians can do what you are trying to say, लेकिन हम्म। अगर वे आउट इजराइल को भी दे दिया जाए, release all the hostages, suppose that हाँ would वो be a है। that would be a या big victory. 6 बिलियन तुम ले लो, होस्टेजेस तुम दे दो, इंटरिम गाजा में ठीक है, डीएस्केलेशन, जो करना है करो। गाजा में इंटरिम जो करना है करो, कोई नहीं बोलेगा। हम्म। इंटरिम डीएस्केलेशन कर लो एंड देन वर्क टुवर्ड द फाइनल डीएस्केलेशन, दैट्स पॉसिबल सर। राइट? सो सॉल्यूशंस के अगर ढूंढना है तो आंसर्स मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको सॉल्यूशंस के आंसर नहीं मिल सकते, हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप नहीं करना चाहो तो फिर आप रास्ता रहने पर भी आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे, हाँ। या right? So in my view, I think this is what the future lies in front of us. Of course, we plan for two. There can be the हैपेंस फॉर। third happens. There could be a nuclear strike. That is a big question. I am an optimist. I am an optimist, so I believe या that there is some likelihood of a nuclear strike, because, in my view, I think the Iranians also have some kind of a nuclear capability now available with them. As per the open source information which is floating around in the environment, that if they were weeks away from developing a capability, then I'm sure the weeks have gone into months, and by now they would have had, and that is हो गया why they होगा have सर। undertaken such a large scale attack. बट सर मेरे को एक एक चीज बताओ, नाउ मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछने बिफोर वी गेट इनटू ऑडियंस। बहुत सारी ऑडियंस है हमारे पास, 3600 लोग देख रहे हैं इस टाइम पे। Hmm. गाइस प्लीज जरा लाइक्स तो यार, लाइक्स में कंजूसी मत करो प्लीज, जरा जोर से लाइक्स का दान प्रदान करिए, ठीक है? इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, इट जस्ट कॉस्ट अ टच ऑफ द स्क्रीन दैट यू आर एट। सर मेरे को एक चीज पूछनी है, देखिए आई एम स्टिल स्टक ऑन द फैक्टर, एंड लेट्स कंसीडर फॉर अ फैक्टर कि इजराइल एक लिमिटेड रिस्पॉन्स करता है। इट इज नॉट अ रिस्पॉन्स टू इट्स न्यूक्लियर साइट्स, इट इज नॉट अ रिस्पॉन्स टू सम कोई बड़ा बड़ा इधर उधर नहीं है। एक कोई आईआरजीसी की किसी एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे इधर उधर जाके कहीं पे, जहां से ये मिसाइल का बटन दबाया था उसको जाके ये फट मार देते हैं, विच इज क्वाइट पॉसिबल। स्टैंड ऑफ वेपन्स फायर करे आपने जाके, कहीं अजरबैजान के ऊपर से आपने उड़ाया, ठक बिल्कुल। ठक फिनिश्ड। Hmm. ये पॉसिबिलिटी में देखिए अभी क्या होगा, कहीं ना कहीं इट इज नॉट दैट हेवी अ स्ट्राइक, बट इट इज अ स्ट्राइक। Yeah. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे ईरान नॉर्मली करता है सर, जब भी ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, ईरान जाके पीछे से बोलता है भाई यहां पर मैं मारूंगा, जरा अपने बंदे बंदे दूर कर लेना, आई हैव टू आल्सो सेव फेस, मैंने ट्वाइस वही ही डन बोला ना, दिस। हाँ। मैंने तो वो ये बोला ना कि ये इजराइल भी हो तो कर सकता सकता है सर, वो इजराइल भी तो कर सकता है। है, इजराइल भी कर सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट कुड बी अ शो ऑफ, या इट कुड बी अ ओके, शो ऑफ, इट कुड बी अ शो ऑफ। और उसे मैंने उसको रूल आउट नहीं किया उस ऑप्शन को। और वो ठीक है। शो ऑफ के कारण क्या है? द द बॉम्ब, द बिगर बॉम्ब व्हिच इज देयर इन द मिडिल ईस्ट, floating all around the Middle East with nuclear written all over it, and the people हम्म। in Middle East have got used to not seeing a war जी। of the nature. I mean, last war was all the wars have always been fought by the US on their या soil, and they are also kind of fed up of such wars, and वॉर they जोन। वो कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहे हैं इन हम्म। वॉर में, हम्म। हम्म। कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व, एक स्पेशली साउथ एक अरेबिया और और फैक्टर यूएई। है सर, एक और फैक्टर है, ईरान का एक सेकंड फ्रंट भी है ना सर, जिसमें यूएस खेल रहा है, तो ईरान हैज दैट लिटिल इशू। और ये मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि क्योंकि देखिए अगर ईरान ज्यादा थोड़ा सा वो होता है, यूएस कैन क्रिएट दैट प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान। जुंदला इज So एक्टिवेटेड, आईएसकेपी इज एक्टिवेटेड। तो that's right. इसका क्या आप That is इस चीज को कहां पर डालते हैं सिचुएशन में? that is why the Iranian foreign minister and Pakistani foreign minister met
In fact, the Iranian foreign minister went to Pakistan नहीं नहीं, and had, प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट वेंट, sorry, रईसी वेंट. yeah, so and they had a talk with each other and they decided to cool down. That is kind of keeping your front quiet so that they can focus on the their western front. And like I said, Iran may look a little irrational because of their radical thoughts या as far as religion is concerned. As far as religion is concerned, लेकिन बाकी चीजों में वो काफी रैशनल है. एक पुरानी सिविलाइजेशन है, उनके पास थिंकिंग पावर है, पीपल आर देयर हु कैन एक्चुअली हु कैन टेक वेरी कंसिडर्ड स्टेप्स. जो भी एक्शंस वो लेते हैं वो क्यों प्रॉक्सी के डोमेन में ले रहे हैं? दे डोंट वांट एनीथिंग टू कम ऑन देम. उन्होंने अपना लेसन ईरान इराक वॉर से सीख लिया है और इसलिए ये उन्होंने दे वर फोर्स्ड टू टेक अ डायरेक्ट एक्शन की उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया. जो सीरिया डमास्कस में जो अटैक हुआ था, दे डिफाइंड इट एज एन अटैक ऑन द सोवरेनिटी ऑफ ईरान. बिकॉज आपको पता होगा जितनी एम्बेसीज होती हैं चाहे किसी भी देश में हो, अगर मान लीजिए अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है और अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर अटैक होता है तो इट इज कंसिडर्ड एज अटैक ऑन द सोवरेनिटी ऑफ अमेरिका. करेक्ट. Similarly, if an Indian embassy is there somewhere and Indian embassy gets attacked, इसीलिए हमने कितना हंगामा मचाया था जब सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सुलेट के ऊपर हुआ था, या कनाडा में इन्होंने हमारे एम्बेसी के सॉरी हाई कमीशन के चारों तरफ इन्होंने ब्लॉकेड वगैरह करी थी, थ्रेट्स दी थी. हमारे जो ऑफिशियल्स थे वहाँ जा नहीं पा रहे थे. तो दिस इज कंसिडर्ड एज एनक्रोचमेंट ऑफ योर सॉवरेनिटी और इसको ईरान ने काफी ज्यादा ब्लो अप किया. तो दे हैड टू टेक एन एक्शन डायरेक्टली टू अवेंज देयर सोवरेनिटी. और दूसरा रीजन मैं ये बोल रहा हूँ कि वाई न्यूक्लियर हो सकता है ईरान. देखिए, पहली बार जब सुलेमानी को मारा था, याद है आपको? सुलेमानी को जब मारा था, वो भी आईआरजीसी का था, तब इन्होंने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, इतना बड़ा एक्शन. बता दूं के मैं इधर हाँ, मारूंगा. हाँ. अब क्या हुआ है कि अभी भी बताया तो था इन्होंने, यू कैन मेक आउट कि 2 दिन से अमेरिका बोल रहा है कि दे आर लाइकली टू होगा टेक अ बिग होगा एक्शन. होगा. They're likely to take a big action. We are prepared for it. We are telling people not to undertake it, etc. etc. वो उन्होंने इजिप्ट से बात करी, टर्की से बात करी कि भाई बोलो ईरान को, कि सऊदी अरेबिया को बोलो कि ईरान भाई यू शुड नॉट इंडल्ज इन दिस, अदरवाइज यूएस जो है इट विल टेक साइड्स. एंड आपको पता है हमारी साइड्स क्या होंगी, आयरन क्लैड. एक नया फ्रेज आजकल शुरू हो रखा है. फिलीपींस के लिए भी आयरन क्लैड है, जापान के लिए भी आयरन क्लैड है और इजराइल के लिए भी आयरन क्लैड है. बट इज द आयरन शीट थिनर थिकर फॉर ईच ऑफ दीज 3 कंट्रीज इज द क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू आस्क. नहीं, वो तो वेयर इज एविडेंट हो गया ना सर. यूक्रेन में भी आयरन क्लैड था लेकिन वो थोड़ा एल्यूमिनियम टाइप था, पतला सा. एल्यूमिनियम टाइप था. तो आयरन क्लैड कितना आयरन क्लैड है? That also may now the करेक्ट. differentiation is how strong is your ironclad. If या your या. ironclad is not very strong, incidentally, I was hearing a kind of a YouTube. This must be of interest to your people. They said कि भाई ईरान जो है is actually the word Iran is actually iron, अच्छा. iron. So they were the Aryans, original Aryans of the world. आयंस ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा सर, लेकिन And अभी second country which is considered the original Ions of the world, is not Germany, it's Ireland. हम्म, It was spelled as EIRAN initially, long time back. सर, Ireland. just a counter question to the Pakistan point, sir. After that, we'll get into the audience. Guys, likes. Most importantly, before I come to you guys, पाकिस्तान के ये जो ग्रुप्स हैं सर, नॉट कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान. तो इब्राहिम रईसी कर ले अपना थोड़ा पाकिस्तान के साथ चार्ली विस्की, लेकिन कंट्रोल तो अमेरिका करता है सर. एंड ईरान ने बाय द वे सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं अपने कंट्री में फॉर द नेक्स्ट 2 days. तो ईरान इज Yeah, एक्सपेक्टिंग अ बूम बैक. एंड कहीं ना कहीं बिल्कुल. मेरे को कहीं वो लगता है सर कि अमेरिका इसको अगर 1-2 दिन में ईरान में कोई एक टेररिस्ट अटैक होता है
तो दैट इज अ क्लियर सिग्नल दैट अमेरिका वहां से एक मैसेज भेज रहा है, बेटा ठंडा हो जा, बहुत हो गया. एंड दूसरा, अगर देखो, हाउ डू यू सी दिस दिस गेम, बिकॉज the यहाँ पर एक गेम है. the response has to be a matching response. हाँ. If not, if not, if not higher, at हम्म. least it should look like matching response. Okay. Now proxy war तो रोज करता है ईरान, लेकिन अगर प्रॉक्सी में एक डर्टी बॉम्ब घुसेड़ दिया उसने, then it becomes a higher, then it becomes a higher level. Similarly, getting back to Iran by USA through ISKP, etc., he has done it a number of times. That will not rattle the Iranians. What will rattle the Iranians is something happening at the level with a proxy on their power symbol. हम्म. You got it? On their power symbol, not Soleimani. Something, say for example, the prime minister or president or their parliament, or whatever way it is, a power symbol attack, if it is a proxy attack, would be a matching response. करेक्ट. Or a, a surgical strike through missile addressing something which is of a great value as far as Iranian military power is concerned. हम्म. Okay, so that will be the response which we might see. इट्स अ वेरी टफ 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 सिचुएशन. एंड आई विश, मेरे मेरे हिसाब से तो गुड सेंस प्रिवेल्स. अगर एक एक आधा इधर उधर कुछ करना है, तो आई थिंक बैक ऑफिस से कुछ बात बूत करके एक दूसरे के ऊपर एक खाली खाली जगह पे कुछ ठोक ठाक के खत्म करो यार, बिकॉज Yeah. दिस इज नॉट द टाइम So, फॉर दिस so, थिंग टू एस्केलेट. इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ तमाशा. so Iranian nuclear facility could be one of the. या कुड बी. So that would be a matching response. यस सर. Even the Iranians tried the southern Israel. Southern Israel has the कपड़े की opposite. फैक्ट्री सर. नहीं नहीं, कपड़े की फैक्ट्री है सर. वो Yeah, कपड़ों की yeah, yeah. फैक्ट्री है. वो कपड़ों की फैक्ट्री Absolutely. है. आज सुबह मेरा दोस्त बोल रहा था, तो मैंने उसको बोला, यार तुम्हारे पास तो है ही नहीं. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर? न्यूक्लियर कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास तो कहता है, नहीं नहीं, कपड़े की फैक्ट्री, हम कपड़े के बॉल बना के फेंकेंगे. मैं, अच्छा ठीक है. बढ़िया है, कोई बात नहीं. गाइस, लेट्स गेट इनटू योर क्वेश्चंस. एंड जाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक बटन दबाइए, आप सब्सक्राइब बटन दबाइए अगर आपने नहीं करा है. एंड मैं प्लीज, आई से दिस, लाइव पे तो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर सब्सक्राइब, बट जो लोग बाद में देखते हैं, ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पीपल आर नॉट सब्सक्राइब्ड. तो प्लीज 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 हिट द सब्सक्राइब बटन. आज हम लोग 191,000 पे हैं. आई थिंक अभी हमारी तारीख क्या है? दिस द 14th. Another 16 days, we need to gain in 9,000 subscribers. That's about 5 to 600 subscribers a day. तो आपके लाइक दबाने से ही ये चीज हो सकती है. सो प्लीज हेल्प मी आउट विद दैट. एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड. पेपैल जो लोग देश के बाहर हैं, फॉर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या फिर आप मेंबर्स बन के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सर, काफी सारे सवाल हैं सर. I think people are looking for your opinions, but I'll just announce the new members. Shri Kumar ji, thank you so much for becoming a member. Potato Droid, that's an interesting name. Thank you for becoming a member. Uh, Ravi Kumar ji, thank you so much for becoming a member. Kapil, thanks once again for becoming a member. Okay, Adinath ji कहते हैं, thank you firstly. He says Israel has said there will be an earthquake in Iran. Mhm. Yeah. So Yeah. this is a simile. This is just a metaphor. This is Symbolism, just a sir? metaphor. Yeah. Mhm. And I've already answered this. There will be Yeah, yeah, something which to. yeah. Harshal ji, thank you so much. Hello, sir. How did Pakistanis manage to get the nukes? Sir, may I? They stole them? Yeah, yeah. But this is a very common They stole them? question. Chalo. चोरी का This माल this है. is yeah. This has been basically through Netherlands and China. Yeah. Tony Stark, And thanks so much. He says Q Khan is the person who stole the correct. technology from Netherlands. Yeah. Israel versus Iran, Iran versus Pakistan, Neom sitting getting setbacks. Qatar always messed with the Middle Eastern country. USA desperate, and also Iraq.
Arab Spring is returning. I don't think the spring is returning, but the rest of what you said is correct. Yeah. See, Arab Spring, as of now, I don't think it is looking anywhere near as far as the Middle East is concerned, except for some countries which are in a conflict-ridden state, and Hmm. there are not many people left to actually do any Arab Spring. Whether Hmm. you take Syria, whether you take Palestine, it's unlikely. There are going to be more and more conflicts which will come up. That I can tell you. There will be rise in terrorism. That I can tell you with confirmation. There will be rise in proxy. There'll be rise in the seaborne terror attacks. These things are going to happen, and if we don't manage the situation well, there could be a black swan event, which could be, you know, सर maybe. आर्मी चीफ ने बोला ही था, 2-3-4 दिन पहले आर्मी चीफ ने बोला कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अ ब्लैक स्वान इवेंट। बट सर Yeah, आप मेरे को इस पे कमेंट दो, वो जो शिप इन्होंने हाईजैक करी है, व्हाट इज mm, योर दिस थिंग ऑन दिस, क्योंकि उसमें इंडियंस भी हैं एंड हमारी तरफ से एक yeah, स्ट्रांग स्टेटमेंट भी आया और बात भी चल रही है पीछे से। नाउ yeah. ये See, आई मीन given the kind of communication, back channel communications which India has with Iran, I think the Indians will be out of the. But India would not like to do it India alone, because then it would be seen as kind of a party to the फेवरेटिज्म। axis of resistance. The name which is now being given is axis of resistance, which India is not. India is not part of the axis of resistance. So therefore, India would be negotiating for release of the crew of everyone. I think that would be the priority. As far as the ship is concerned, शिप तो that गया, the that they can lump it. शिप तो Okay. गया, शिप नहीं आता, Mhm. Yeah, that they can lump it. वो नहीं आता सर। Sudhakar Mhm. ji says, what step will be taken by Bharat in the present situation? That's what I said. This is the dilemma for India. I think India will try to play its autonomy card as far as possible, and keep keep insisting on restoration of peace. What we did in Ukraine, My that would be apologies. the what we did in Ukraine, that would be the model which India would follow. जी, जी। हाफ Restoration of स्टार peace. हाफ स्टार 21 से, सर क्या चाइना ताइवान के लिए ताइवान की तरफ जाएगा सर? क्या चाइना ताइवान के लिए ताइवान के जाएगा लिए अगर यहाँ और जाएगा, लोग अगर यहाँ और आग लगी तो? न- अ, अगर अगर यूएस एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया तो ताइवान की तरफ नहीं जाएगा। अगर यूएस इज सीन एज अ वीक रेस्पॉन्स, तब चाइना का जो क्या बोलते हैं हिम्मत और बढ़ेगी, और तब हाँ, ताइवान के खिलाफ कुछ कर सकता है। तो इसलिए यूएस को इस समय, दैट इज वाई आप देख नहीं रहे हो आयरन क्लैड हर जगह आ रहा है। ये आयरन क्लैड इसके लिए नहीं है, आयरन क्लैड ईरान के लिए नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर मिस्टेकन इफ दिस आयरन क्लैड वार्निंग इज बीइंग गिवन फॉर ईरान और फॉर that matter to any other country, Russia. It is meant for China, not even meant for Russia. Russia and US are old partners in Cold War. They know how to play Cold War. They know how to manage the nuclear deterrence. हम्म, And if you want to know, read the Cuban crisis, and the you will get the answer that it's easier to manage the Russians. So all this warning which is going on here is for China, and that is why the Americans will take something very serious action in case if Iran doesn't pipe down. सर जिगर जी कहते हैं, आदि जी डिड नॉट सी एनी रिस्पांस फ्रॉम टर्की। They are behind the scene for a restoration of peace. They are acting like the Indians. We are trying to also uh, pipe down the two warring parties. या आकाश जी कहते हैं, द Iranian leadership has played into the ego game. They could have maintained their position of deniability and sustained their operations otherwise through their vectors. Your views? There are certain red lines, and the answer lies in my first initial response. It has a glorious past, glorious civilization, a significant power in the world for good over the entire half of the world was controlled by them. Known world, that time nobody knew Americas. So half of the world was controlled by them.
So therefore, the ego will come out at some stage or the other, and this is a red line which they couldn't absorb anymore. It was Soleimani's entire command structure getting destroyed with the strike at Damascus. Six army officers, all six eliminated in one single strike, including the commander of the Al-Quds brigade. I'm going to take an out of turn question. Pardon me, guys, but this is connected to the Turkey thing. पालोमी जी कहते हैं कि फिलहाल टर्की इन्वॉल्व नहीं हुआ बट वो भी होगा फिर सऊदी अरेबिया होगा इट्स सो टेरेबल नाउ व्हाई हैव आई टेकन दिस क्वेश्चन सर सी टर्की Yeah, हैज एंटागोनिज्म अगेंस्ट ईरान in terms of Azerbaijan, Armenia. My point is, sir, if that thing blows up, that could be a proxy war between Israel and Israel and Iran. yeah. See, the Armenia is trying very hard to woo Iran because it did not get the right response from Russians. In fact, the Russians told the Armenians that you give whatever the Azerbaijanis want. If they want Nagorno Karabakh, give it to them, and they gave it. The Armenians, they actually gave it on a platter. Subsequently, but still, the response from Russia has not been encouraging for Armenia. So That's why Armenia they is went now and sat looking. with Americans now. So that's why Armenia is now looking for some kind of a support. So they, Yeah. in fact, invited Zelensky. They are approaching India, so India gave them support. And in the same sequence, they also approached the Iranians. They border the Iranians, so Yeah. their actually support, their support has a very meaningful impact. Well, you know, and the ethnic Azeris that stay in the northern Iran, they keep creating problems for the Iranians. So that will be a big antagonizing factor for both the places, sir. Yeah, as far as Saudis are concerned, I think they will not enter till their borders are impacted. जी 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 They will try to find a peaceful solution till the end. That I agree with, sir. Absolutely correct, sir. आनंद जी कहते हैं which weapons Israel will use to attack because of international boundaries of different countries. See, it has not bothered about the international boundaries earlier. Why should it bother now? If it is able to sanitize the air defense of these countries, and mind you, most of these countries now, Israel is having a relatively better relationship. Whether you Relationship. take Saudi Arabia, except for flying over Lebanon and Syria, it is fairly okay flying over Iraq or Saudi Arabia. So Syria also they'll take American permission. Americans will say, "हाँ ठीक करो यार जो करना है तुमको." But Syria, there are chances because there are rogue elements all over in Yeah, Syria. Syria, you can't yeah. you can't predict who is going to fire at you. So Syria, they will have to cater for active air defense when they are going through हाँ the बट Syrian air. पहले भी जैसे आपने बोला सर पहले भी ईरानियन रिएक्टर को उड़ा चुके हैं ये लोग तो बिल्कुल. So something like that. I told you, I gave you the hint. I didn't tell जी you जी जी directly that they're going to. Well, that's what may happen. That's जी what may happen. Arun Kumar ji, thank you so much for becoming a member. Adinath ji, thank you so much for your contribution. He says she met Ma Ying-yu, ex-Taiwan president. In my opinion, US doesn't get aggressive. China has a roadmap for Taiwan. It's You see, quite as far as insecure. Ma Ying-jeou's meeting with the Chinese is concerned, he's an ex-president. Yeah. That's point number one. The current dispensation, which is the क्या बोलते हैं, what is his name here? Who was the vice premier, and now he is going to become the president of Taiwan. They are not favorably disposed to China. So the Mhm. current policy of China Taiwan uh, merging together peacefully remains a very unlikely proposition, and therefore that has been the reason why the premier Li Qiang gave a statement that we are firm about the reunification of Taiwan with China. So chances of a peaceful reunification, definitely no. As of now, at least in the next 4 5 years, no. SN साहब कहते हैं geopolitical observation from West, Ukraine, Israel, Iran, USA influence from East, Taiwan, Philippines, Myanmar, China influence. Do you see axis of conflict closing in on Bharat?
You It's a wild see, one. you, axis of influence, axis of conflict closing in on Bharat. If you look at it purely from a, if the world is driven by the interest of China and the US, then yes, willy nilly, India will get involved. What happened in World War II? World War II had the British India getting involved. Of course, the interests were that British interests were there playing, but now in case of India also, our interests are there. So if our northeastern or the western theaters are or western fronts are uh, affected, we will get willingly involved. But my sense is we will get involved in our own areas and territories. Yeah. So we would be restricting ourselves to the IOR, Malacca, and to this side in the Arabian Sea and east of Horn of Africa. That would be our belt as far as the maritime thing is concerned, and as far as the land frontiers are concerned, we would be essentially focused on continental defense. Yeah. So I don't think we may be willy nilly part of a axis, but not actively supporting A or B. So But it depends. If somebody becomes an evil power, then we might join the. we might have to actually. क्या करेंगे सर और Yeah, yeah. The सर situation प्रकाश जी will कह tell. Situation will tell. The जी situation जी at that time will tell where we will go. जी प्रकाश जी कहते हैं considering all these weapons are Chinese supplies and the drones and missiles have all been intercepted, won't China be embarrassed to go for any form of conflict? Yeah, sure. Why not? What the Chinese are doing, the Chinese, right from Ukraine war onward, are actually trying to improve their systems based on the success which they are getting. And I think that's a good way. Yeah. Why should you test a system in your own war? Test a system in somebody else's war. But Okay. seriously, sir, So, I mean, obviously Chinese are worried. I hope you know that the Chinese have given main battle tank to Pakistan, which is called Haider, and that is Heather, misbehaving, and that is misbehaving. sir, the reports say either you put ammunition or you put fuel. दोनों डाल Fuel. दो तो नहीं चलता वो. This is what So, that, Pakistanis are saying, by the way, huh? so So and Pakistanis are now producing it. Pakistanis are yeah, now producing it themselves. yeah. So they're supposed to balance it out, and in a wartime Hmm. scenario, I don't know how they will fill up fuel. I have no idea, but that's See, the it's game. good Last for few us. Yeah. It's good for us. target practice, sir. Hmm. Yeah. Last few questions, sir. Is this the highest online viewing Dev Talks have not had? No, but we are pretty close Hmm. to it. We touched 4,000 viewers today, sir. No, I think once with me you touched nearly seven. 4,500, 4,300 viewers. Once you touched 7,000. That was in the night. No, You 7,000. touched 4,300. 4,300 था sir. That's the 4,500 has been my highest, sir. Highest इससे ऊपर okay. नहीं गया मैं. Okay. Anyways, Bharat Pretty much Parekh this is ji, very nice. yes, sir. General sir think that China will take advantage of the situation to attract Bharat or Taiwan. Taiwan we've spoken. Let's talk about Bharat, sir. No, not exactly. Bharat is a country which is developing on its own. It is not taking. It is not a small country like Taiwan. It has enough terrain and capability and willpower friction, plus add the full nuclear deterrence to it. Going to Hmm. war with China, going to war with India for China is going to be a very, very difficult question to take. Yes, I cannot rule out a small little excursion here, making villages here and there, these kind of things will continue. We are also doing it, they are also doing it. Let me tell you, we are matching them. And both sides don't want a war because our aim is to reach the bloody 30 trillion mark as the, sorry, 10 trillion mark at the earliest by 2030. If we reach 10 trillion by 2030, the window of opportunity for China is out. Let me just tell you. Then India is not, there will be conflicts, there will be border frictions, but to say that they will go for a conventional war with India, unlikely.
Rajesh Agrawal ji says, "Ask Adi, will Russia join this war in some form? What will happen to Fatu China when his energy needs are being affected? How does the US, how the US will call Iran's nuclear bluff, or is it worried about it?" I think the energy need is the most important question that you need to answer from this, sir. ये बताओ मेरे को, क्योंकि इसने एक ship तो उठा लिया. The next thing will हाँ, be if somebody blockades Iran, ये गया sir. yeah. See, It's not that difficult to do. Iran, worry for Iran is uh, the 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 energy trade. As such, it is under heavy sanctions. So therefore, India has cut down its imports from Iran. A lot of countries are looking for alternate options. So Iran is in a problem if its oil trade gets further restricted, because China has still been taking oil from Iran. China has not Hmm. stopped its import of oil. But worst comes to worse, I think it may have to turn its trade on its head, and that Wow. is focus on the land frontiers. Russia is in need of help. Russian eastern region is in need of help. In fact, Russia is cozying up to China for only one reason: transporting things from Western Russia to Eastern Russia is a huge distance, Hmm. a very long distance. So therefore, Iran can easily become a trade route for Kazakhstan, Uzbekistan, these countries, Kyrgyzstan. These countries can become the trading partners or partners of Iran. So therefore, it will have to turn the trade on its head. That is one, and also maybe look at pipeline based. Although it's very costly, let me tell you, in dire times you find dire solutions. So it will try to find some solutions. Connected to that, sir, Partha asks, can we use this conflict and ship hijackings to push for more bases, listening posts across West Asia? What is blueprint? What is the blueprint in securing IMEC? IMEC के लिए I2 U2 है, but can we use this, sir? देखो This is an interesting question. देखो, as far as this question of yours, we are already doing it. Let me just tell you that it's not that India has not thought about it. We are already, in some form or the other, creating our MROs and logistics bases in this part of the world. Either it is exchanged through the US facilities, because we have a logistics arrangements with the US, so Mutual we can logistics take arrangement, yes, sir. so we can take a interchange facility, although it's not self-reliant. But since we are giving it in India, so we can Hmm. also take it in, say, Oman, where there is a military base, and likewise Djibouti, there is a US base. So we can, lean on Djibouti also, although there is a Chinese base also in that area. But what I'm trying to say is, in this area, India is already doing it. Mauritius, we have already created some kind of a base with inauguration of the Agalge airfield. Then you have Minicoy also being tried to made into some kind of a base. We are only thinking 16 DAs have now been earmarked for countries Yeah. like Mozambique. Now Mozambique, we have got for Mozambique three oil fields of Mozambique. Sorry, the 7,000 hectare area of Mozambique have been awarded to three Indian companies: the Oil India, ONGC Videsh, and there is one more company. So these are the three companies which have taken the contract for exploration. It got delayed. The exploration was to start in 2024 this year, but because Yes, of sir. this internal security situation in Mozambique, this has got delayed to 2027. But don't be disheartened by it. The oil minister actually went again, and they're trying to Hmm. push back this. They're trying to push back this date to about 25, 26. So as India and early France as are doing this. absolutely. So there is a now DA posted to Mozambique. There's a DA posted to Djibouti, a small little country. Why has the DA been posted to Djibouti? Essentially to There's a exploit the Chinese base, no? US base. There is a There's a Chinese Chinese base base there. there, no, sir? है ना? Huh, huh. There is a Chinese base Yes. in the north, and Yes. there is a और क्या base, and चाहिए? there is a French base also, and we are in very good Chinese. relation with French and the US. So Yes, sir. therefore,
we are already doing action what you're suggesting. It's a good observation. So, and the last question is a basic question. Sir, Vantham says, how can we one study geopolitics? Would love to have a one-on-one on how to understand the game of geopolitics. Okay, for reading geopolitics, you got a lot of books on international relations, theory of international relations. Read Alfred Mahan, read Mackinder. These are the people who will tell you. I mean, they are already dead now, but their theories will tell you how geopolitics works. So it's a proper, in fact, area of study. You could Science. do a master's in international relations, and you will realize what goes into geopolitics. There are political thoughts which are also taught in this particular subject or particular field. So therefore, for geopolitics, otherwise, follow all the international relations authors' books. I think we'll get the sense of geopolitics. What does geopolitics means? The geography dictating the politics is geopolitics in simple terms. I have a geographical situation in which if my neighbor is not friendly with me, my geopolitics will change. So what I will do, I'll find neighbor's neighbor as my friend and try to squeeze him. So basically, when geography dictates politics, that is essentially geopolitics. Nowadays, uh, there are there are number of books on geopolitics. You can just hunt around on the net. They'll Yeah. be able to Might tell I you. add, कभी भी कुछ किसी एरिया के बारे में आपको सवाल है, open a map, Hmm. look at that area, look at the Yeah, surrounding countries, look correct. at which are the two countries you have an issue, how are they connected, how are they not connected, what is the distance, is there an ocean, is there a mountain range, is there geographical features. This will tell you a lot in terms of kya, how this thing is, how the politics and the geopolitics actually gets impacted. Just just show the last map. Yeah. Just see this. You have Iran, you have Afghanistan, you have Pakistan, you have Russia in the north, and you have Saudi Arabia to the west, and you have a small little ocean in between called the Persian Gulf. This is the geography which is dictating the politics of the region. Why? There is oil all around the Persian Gulf. So oil has to be taken out. This is geography. If the oil has to be taken out, I must have control of this Gulf. Who has the control? One in the north, one in the south. So therefore, the politics is: should I make good friends with Iran, or should I make good friends with Saudi Arabia, Oman, etc., UAE? So that's the way it is. Geography is now dictating my relationships, international relations, or my politics. My enemy has caught on to Iran, so I must find somebody who can counter this. So maybe I'll cozy up with UAE. Yeah. Geography वही होती है यार. I mean, geography is the most important thing to understand any situation between two countries. तो आप, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, otherwise if you want to start with geography, एक बड़ी tough किताब है. It's Robert Kaplan की. It's called The Revenge of Geography. Try and figure Hmm. that out. If you're able to That's a understand it, trust you me, that's a very thick book and very complex book. समझना very मुश्किल होता है complex. उसको. Yeah, yeah, But to begin with, I think there are good books on international relations. आप yeah, पढ़ लो. Theory of absolutely. international relations पढ़ो. You just type theory of international relation, and you will get enough material on Enough, geopolitics. enough. Sarji, thank you so much for spending this wonderful Sunday with us. Thank आपने, you. you've taken up very very important subjects क्योंकि it's a geopolitical event that we did not expect would happen. इतना Yeah. टाइम ये वॉर चल रही थी, ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट हो गया है. And we need to keep a track, and we need to kind of you know figure out what's happening. So thank you once again, sir, and see you next time. Thank you. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Bharat.